Hello, good morning, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And in the Pavilion, I am joined with legends, the heroes and icons of the game. I've got the young Shoaib Malik, Mr. Dependable Misbah-ul Haq, the toe-crushing Waqar Yunus, and the Sultan of Swing, the Singh Akram. Good morning and assalamu alaikum, gentlemen. Good morning, assalamu alaikum everyone. Let's take a look at the points table. आज हम वापस Geelong जाएंगे और दूसरे ग्रुप की तरफ देखेंगे. दो matches coming up today. This is how it's going to be. This is Group A, which is currently Netherlands, right on top there. And then you've got Namibia. Namibia with a very good run rate. Sri Lanka, well, they're there with the 2 points, but that run rate isn't looking good. The UAE has not picked up any point as yet. Ye surat-e-haal hai. Let's look at the clashes that we have set up today in Geelong. Here's the first match that is coming out your way on A Sports and 10 Sports. This is Netherlands versus Sri Lanka. Netherlands versus Sri Lanka. Netherlands, they have the potential to surprise Sri Lanka. This is the second game coming up here. Namibia versus the United Arab Emirates. Now, Namibia also hoping to go through to the Super 12. Interestingly loaded group as well. Wasim, let's start off. Netherlands, they have the potential to rattle Sri Lanka? Sri Lanka, I suppose, is the most experienced side. We all know. They had one bad game शुरू में. मगर आज बड़ा simple सा scenario है दोनों टीमों के लिए. जो भी जीतेगा, अगर Netherland जीतता है, they'll qualify. अगर Sri Lanka जीता, they can also qualify. So it's a big deal. अगर जो भी टीम हारती है, then they will be realizing on the other game, UAE वाले मैच पे कि कोई उससे जीते, कोई उससे हारे. So better for both sides is that they win the game. And of course, Sri Lankan are the favorites today. This is now how Netherlands can qualify for Super 12. If they win the match, they will qualify for Super 12. And if they lose, then they will... Netherlands, even they lose, but they don't lose by big margin. I feel that they can still qualify. Correct. So it's going to be more dangerous for Sri Lanka than Netherlands, because Sri Lanka have to win this game to go through, and I'm sure the plans are there. Netherlands, पिछले couple of times against खेले, they had a really bad run against them, so they have to play out of their skin to beat Sri Lanka. Sri Lanka, yes, they lost one game, but we all know that they're a classy side. They can, Asian Cup winner hain, so they will probably come hard. All right, let's talk about the Netherlands team now. They've had a great all-round performance from De Leijder in the last game, and both with the ball and the bat. He was an impact player for them in the previous game. Misbah, when you look at this Netherlands side, and especially these performances that they have, what do you reckon? How is the Netherlands positioned right now for this game today? I think overall, अगर हम दोनों टीमों को देखें और जो previous encounter इनका हुआ है, श्रीलंका को बहुत ज़्यादा advantage है, and the way their batting is at the moment performing, they are not doing justice. I think the way they played against Pakistan and the ODIs performed well, but overall they won 2 games fine, but वो जो परफॉर्मेंस एक ऐसी होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है बैटिंग डिपार्टमेंट में, वो उस तरह से नहीं है. दोनों बड़े क्लोज मैच जीते हैं, आखिरी ओवर में जाके उन्होंने चेस किया, कोई इतने बड़े स्कोर नहीं थे. कंडीशंस आर डिफरेंट. हाँ, पिछले दो आउटिंग्स में नीदरलैंड हैज मैसिवली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया दे आर डिफरेंट, सो यू कैन नॉट रियली राइट देम ऑफ. Yeah, I think, but still, I think Sri Lankan spinners will have a big say. हसरंगा के अगेंस्ट बहुत बड़ा इनको इशू रहा है. फिर ठीक शना को भी खेलते हुए उन्होंने लास्ट टाइम वो शॉर्टेस्ट इनिंग थी, बहुत कम स्कोर पे आउट हुए नीदरलैंड उनके अगेंस्ट. तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग हर्डल फॉर देम कि उसको कैसे उन्होंने क्रॉस करना है, उनके स्पिनर्स को कैसे उनके अगेंस्ट रन्स करने हैं. ऑब्वियसली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी. आज के पिच पे अगर घास नहीं है, प्रीवियस जिस तरह का मैच है श्रीलंका का, तो देन श्रीलंका हैव एन एडवांटेज. और नीदरलैंड अभी हम बात कर रहे थे, उनके लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमीबिया के ज़्यादा चांसेस हैं यूए के अगेंस्ट जीतने के. अगर वो जीत गए, उनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा इनसे आगे है, और ये अगर हारेंगे, इनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको मैच जीतना है.
ये अगर हारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वालिफाई करेंगे। नमीबिया जीत गया था। Shoaib, who are the impact players for Netherlands in your books? I still believe कि जो टॉम कूपर है, he's played a lot of international cricket और मेरे ख्याल में ये की प्लेयर हैं और अभी तक इनसे कोई बड़ी इनिंग्स आई नहीं। आई होप कि वो आज जो है बड़ी इनिंग्स खेलेंगे और इम्पैक्टफुल प्लेयर बनेंगे। All right, so Tom Cooper, let's keep an eye out for him. Let's talk about Sri Lanka, the Asian champions currently. They've had a great run recently, They did. except that surprise that they got right at the beginning of the World Cup. Yeah, and obviously injury problem. Yes. दो उनकी replacements आ गई हैं. Chamira got injured again. We were discussing the calf muscle. It takes time. You feel fit once in a while. जब even 6 हफ्ते बाद भी, और जब pressure पड़ता है, calf muscle वो main muscle होता है. उसके बाद I think same thing happened to Chamira. He was one of the main bowlers. And फिर middle order batsman गुनुतिलके की जगह उनका hamstring गया, उनकी जगह आया बंदारा. So yeah, the middle order is struggling. They only scored 17 runs so far in this the middle order. Yeah. So I think they need to fire as well. गन फील्डर भी है ये साथ में जिसकी रिप्लेसमेंट हुई है। Right. जी। हाँ, ये जरा स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं। Let's take a look with the replacements. How is the squad now loaded up? Yes, Waqar, why don't you take us through the squad? Look, recently, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि एशियन कप विनर हैं, we all have to respect that, and they played outstanding cricket in that Asia Cup. But injury issues हैं, and also they in the same boat what we were, not me, what we were. Middle order not really clicking, and I think, they glimpse नजर आए हैं. Dinesh De Silva played really quite nicely. ऊपर से Srilanka is a very very fine player. रजिता अभी तक जिसने they were really banking on was Rajapaksa. I think उसने वो it's been a disappointment so far. अगर वो click करता है तो I think they'll be fine. He's a very very fine player. What do we know about the replacement, Gasun Rajita? What type of a player is he, Misbah? फास्ट बॉलर, टॉल है, स्विंग करता है बॉल, बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, बट अर्ली ऑन नया बॉल स्पेशली और हाइट है, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है इस वजह से इसको लेके आए हैं कि बेबी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिले. बट आई थिंक कि जो इनका मेन बॉलर इंजर्ड हुआ है, जाहिर है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट जस्ट. और आशन बंदारा, इनके बारे में क्या? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ये और फील्डर जो है एज आई सेड गन फील्डर हैं. राइट. और मेरे वाली सेम टीम में ये LPL में खेलते हैं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा जानता हूँ. और आई थिंक ये रिप्लेसमेंट शायद इतनी ज़्यादा श्रीलंका को हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि एशिया कप में भी गुनुतिलके जो है वो स्कोर नहीं कर रहे थे, तो मे बी ये शायद उनके लिए एक पॉजिटिव थोड़ा सा जो रिप्लेसमेंट आती है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होंगे कि पीछे कोई ऐसा एक्सेस बैगेज नहीं है परफॉर्मेंस ना करने का, तो दैट माइट जस्ट वर्क इन द फेवर ऑफ श्रीलंका कि अच्छा ठीक है जी, एक नया बंदा आता है, वो आके अगर परफॉर्म करता है तो मेरे ख्याल में उनके टॉप ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी साय ऑफ रिलीफ है. So injuries must be worried because Danushka also उनका left hamstring जो है वो tear हो गया है और उनकी जगह पे आशन बंदारा has come into the team. How do you still have a tournament to go? If they qualify for the Super 12s, there is a lot of games to be played. How do you deal with these injuries, or how do you prevent injuries from happening in the future? And currently, Bumrah, Archer, Chamira, Reece Topley, Shakib Mahmood and Shaheen अभी इंजरी से वापस आया है. आई सपोज T20 जो है इट्स अ वेरी फास्ट पेस हाई ऑक्टेन काइंड ऑफ क्रिकेट. अब तो नया जो रूल आ गया है उसमें आप ब्रेक भी नहीं ले सकते इन अ मिनट, बिकॉज आपको फील्डर अंदर बुलाना पड़ेगा. सो एवरीथिंग इज टू फास्ट. वो लगते हैं कि कम ओवर हैं और हैं कम, बट वंस देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन. मे बी दैट्स व्हाई इंजरीज फास्ट बॉलर को ज़्यादा हो रही हैं. आई एम नॉट सो श्योर, बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस इंजरीज हो रही है. क्यों विकी? आई थिंक दिस इज लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग अराउंड. अभी एशिया कप खत्म हुआ, अभी वर्ल्ड कप है, फिर इन बिटवीन देयर सो मेनी लीग्स गोइंग ऑन, सो ऑल दीज टॉप प्लेयर्स दे गो एंड प्ले इन द लीग्स ऑल्सो. तो जो रेस्ट का फैक्टर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं निकल गया. तो एज यू सेड के T20 क्रिकेट इज अ फास्ट मूविंग गेम एंड इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसे छोटी सी तो गेम में इतनी क्या 4 ओवर हैं, बट द प्रेशर दीज गाइज नाउडेज दे कैरी, it is immense, so one got to really think for them. And और दूसरा ये है कि इंजरीज वर्ल्ड कप में होती हैं. पहले 92 में मैं इंजर्ड हुआ, आप वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के दौरान होती हैं. एंड आई थिंक
As a team, you got to forget about it. You got to move on. And अगर आप लेके बैठ गए कि वो क्यों injured हुआ है, ये चमीरा जिस तरीके से injured, ये क्यों हुआ है और अब हम क्या करेंगे? Then that means you're sinking, you're going backward. So yes, it's a big loss, but you know, the replacement आई है is not. Welcome back to the break. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY's app. And our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia continues. We've got 2 games at Geelong today, and the first one being Sri Lanka versus the Netherlands. Netherlands की जरा बात कर लेते हैं. Netherlands के कुछ batsmen जो हैं, they've shown some signs of great promise, and we're hoping that they'll be able to deliver today. Now, remember that Netherlands did chase 112, a low-scoring total against the United Arab Emirates. And Vikramjeet and some of their other batsmen, आपकी screen के ऊपर देख लें, you know, it's interesting situation. There we go. Hey, you see that? Misbah, take us through this batting. ये ज़बरदस्त प्लेयर है, स्पेशली जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन का ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला है अगेंस्ट पाकिस्तान भी. द वे ही जस्ट बैटेड इन द लास्ट गेम, यू कैन सी कि बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टार्ट दिया है, अग्रेसिव ऊपर से खेले हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं. और डाउट जो है ये बेसिकली 100 भी कर चुके हैं इनके लिए T20 क्रिकेट में, बट इन दिस वर्ल्ड कप अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुई उनसे. और आज के मैच में मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस होंगी नेदरलैंड की कि ये आगे कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट गेम फॉर देम और आज का मैच उनके लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है. What is wrong with the middle order, वसीम भाई? अगर सारी टीमों ने चुके देखो तो मिडिल ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग, isn't it? सारी टीमें ऊपर से स्टार्ट मिल रहा है, यू नो, दे आइदर दे 4-5 आउट हो जाते हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी. बट जब भी स्टार्ट भी मिलता है, इवन वेस्ट इंडीज ट्वाइस के बीच में आके 5-6 ठक ठक ठक. आई थिंक लाइक शोएब ने उधर एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली जीलॉन्ग की जो पिच है, उन्होंने घास भी काटा ड्रॉप इन पे, तो उससे भी बाउंस स्पिनर का भी हो रहा था, फास्ट बॉलर का भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था. सो यहाँ पे बड़ी हिटें नहीं लगनी मिडिल में. आपने वो जिसने कहा बिग गैप्स में आपने सिंगल्स करनी है, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. आई थिंक दे आर ट्राइंग टू हिट बिग शॉट्स एंड गेटिंग आउट इन द प्रोसेस. बट भाई जो जब पावर प्ले खत्म होता है ना, तो फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल से 3 और बाहर जाते हैं, राइट. तो गेम चेंज होता है. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप देखते हैं कि आपके ऊपर वाले बैट्समैन किस मोमेंटम में खेल रहे हैं. तो आई गेस वो सेम मोमेंटम को जो है कैच करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बड़े शॉट्स खेले. वो बड़े शॉट्स नहीं खेले जाते. That's a very interesting. लेकिन आई थिंक वकार का जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये ब्रॉडली एक इशू नजर आ रहा है ऑफ मिडिल ऑर्डर. द डॉक्टर मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट. यस, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट फॉर द मिडिल ऑर्डर, मिसबाह उल हक. देखिए ओवरऑल अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर बड़ा मुश्किल एक काम है, जहाँ पे स्पेशली T20 क्रिकेट में ऊपर के जो 3 नंबर्स हैं उनकी एक तो बारी हर मैच में आनी है. दे हैव द मोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ और उन्होंने मिडिल में टाइम भी ज़्यादा गुजार रहा है, उनके पास ओवर भी ज़्यादा है, तो वो टच में होते हैं. मिडिल ऑर्डर में क्या है, आपको सिचुएशंस डिफरेंट मिलेंगी. आपकी हो सकता है 3-2 मैचों में बारी ना आए, सडनली इन अ क्रंच गेम आपकी बैटिंग आई है, आपको आप उस तरीके से फ्लो में नहीं होते. नॉर्मली आप देखें ना, इंडिया के साथ भी ऐसे है कि उनके टॉप 3 इतना ज़्यादा वो ओवर्स ऑलमोस्ट खेल जाते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हैं. पाकिस्तान में भी देखें दोनों ओपनर्स उनकी एवरेजेस ऐसी हैं. तो मिडिल ऑर्डर बेसिकली बहुत कम उनको मौका मिलता है. जब आप मिडिल में टाइम नहीं गुजारेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है. मिडिल ऑर्डर, why middle order is middle order? Why they always a crying baby? You know? No, I think they have a point. The most difficult. It's the hardest job in the world. What about fast bowling? Please take what about the name. What about fast bowling? Are you crying? Oh, complaining maybe. Not complaining. देखिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है ना, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बिल्कुल मुश्किल नहीं है. अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है और अगर आपको आपके गो टू शॉट, जैसे बॉलर है अगर उसको 2 बाउंड्रीज लग गई हैं ओवर में, तो उसका एक गो टू बॉल होता है. ठीक है, या वो सीम अप बॉल है, या वो वेरिएशन है, या यॉर्कर है, बाउंसर है, कुछ भी है. इसी तरह मैं सॉरी यार, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इन वकार भाई को तब समझ आएगी जब ये 5 मैच खेलें और इनको सिर्फ 1 मैच में बॉलिंग मिले,
और मिले भी 18वां और 20वां तो फिर इनको समझ आएगी कि मिडिल ऑर्डर को क्या इशू होता है। मुझे यहाँ जोक बड़ी देर सोच के जो आया मिसबा, बड़ी लेट करेगा ये आई जरूर है, कब बोल लिया थैंक यू पार्टनर। यार ये मिडिल ऑर्डर को परेशानी है, ओपनर्स ਨੂੰ परेशानी और जो फास्ट बॉलर जिन्होंने पहले वो जो 18-20 हो जाते हैं उनके बारे में भी सोचे ना। देखें ना, आपने कहा सारी टीम्स को मिडिल ऑर्डर का इशू है, ऑस्ट्रेलिया को है कि अभी तो देखा नहीं, अभी आते थे। इंग्लैंड को जो रिसेंटली वो खेले हैं, है उनको कोई मसला मसले साढ़े आपको एक जोक आया था कोई बीच में, आप सुना? नहीं, वो मैं नहीं सुना, ऑन एयर नहीं सुना सकता, वो उनकी बात पे था। बट आई थिंक कि आप सारी टीमों को जनरली आप नहीं कह सकते। अभी रिसेंटली अगर देखें तो इंडिया, सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर हार्दिक पांड्या, दे आर द मैच विनर्स। एक्सपीरियंस की बात है, मतलब ठीक कह रहा है कि जो सेटल हैं वो अपने नंबर्स पे सेटल हैं और उनको पता है कि कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है। और आई थिंक के ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर अभी जो इस वर्ल्ड कप स्पेशली डेज हैं। लेट्स वेट टू द सुपर 12 एंड देन प्रोबब्ली थिंग्स विल एंड इवन नामीबिया, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आप देखें कि आयरलैंड की जो मिडिल ऑर्डर में कल पार्टनरशिप हुई आफ्टर लूजिंग early wickets. Yes. That was something, I mean, बड़ा मुश्किल है T20 क्रिकेट में। मिडिल ऑर्डर वाले दिल पे ही ले गए मेरी बात यार, मैंने इतना तो नहीं कहा था। आपने तो बहुत प्यार से you've heard the sentiment of the middle order. प्यार से कहा, हमने रोते जवाब दिया। With that, let's go. We've got Vikramjeet Singh with us. Let's listen in. Delighted to say we've been joined by Vikramjeet Singh. Vikram, even though you're top of the group coming into this last round of matches, there's a lot of chat outside about how everyone expects Sri Lanka and Namibia to qualify from this group. What's the reaction to that sort of chat inside the Netherlands camp? I think just for us, we're quite positive. Obviously, coming off from 2 wins against UAE and Namibia, I think, yeah, like I said, we're quite positive going into this game as well. And I think there's nothing, stopping us to beating Sri Lanka as well. I think, yeah, this should be just another game of cricket. You mentioned positive. You and Max O'Dowd have been giving the side a pretty positive start at the top of the order. What have conditions been like to bat in? I mean, at the start, it's been, it's been a bit tough. But I think what our mindset has been going into these games is, getting off to a flying start. And so far, it's been good. So far we've been able to do that, and I think that's just the positive mindset we're playing with at the moment. You've got the opportunity here ahead of Stefan Myburgh, the veteran. He was the one who played in the qualifiers. You've been given the chance here. How much of a help has he been on the sidelines to you? Oh, great help. I think, yeah. Like I said, Mike is a great guy, and because he's a veteran, he's got a lot of experience, and he tries to share it around with everyone in the group, and it's been good. And what would it mean, victory today in qualifying for the Super 12s? That would be a big relief for us, but I think, going into this, our mindset is very positive, and we're here to win all the games we play. And going into Super 12, we've been working hard from the last year, and this would be a good achievement. Vikramjeet, thank you very much indeed, and good luck today. Yep, thanks. Thank you very much. A lot of confidence oozing there from Vikramjeet. We wish them all the best. But right now, I've got Brian and blazing Basit Khan in the middle of the Geelong Stadium with the pitch report brought to you by Ensure. Pitch report brought to you by Ensure. Piye bharpoor zindagi jiye. All right, there you have it from Basit Khan. सूरज निकला हुआ है, मगर अचानक पिच पे घास फिर से आ गया है। ये क्या मामला है? It's the pitch. इसमें पहले दिन ये मैचेस खेले हैं और वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो रेड वाली थी वो ये घास वाली पिच थी, so lot more bounce. It doesn't look that good from here. बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। For a batsman point of view, तुम्हारे ज़हन में एक डाउट्स तो आएंगे ये वैसी पिच देख के। देखिए, you can tell कि ये drop in pitch है, you can edges आपको नजर आएंगे तो it's like उन्होंने रखी है बीच में। शुक्र है मिसबा भाई की मशीन में पेट्रोल नहीं है। मिसबा भाई ने सबसे पहले जाके कालू आनी सी। It seems like a good pitch, little bit more bounce in it, and जैसे बात ने कहा ना कि ball is kind of a spongy tennis ball bounce if I'm not, and I think this pitch is going to favor Netherlands, then Sri Lanka. Sri Lanka will be under pressure because ये जो इस pitch पर जो bowling करेंगे वो used to हैं इन pitches के। और दूसरी बात ये है कि ये पिच मिसबिहेव ज्यादा ना इवनिंग वाले मैच में ज्यादा करती है देन दैट एक्स्ट्रा बाउंस। On this pitch I definitely win the toss and bat. Yeah, put up a target. I think that would be a good. What would be a good target, Misbah? I think Sri Lanka अगर बैटिंग करेगा they will look to score minimum 150 because last time
10.3 ओवर्स में उन्होंने आउट किया था. कंडीशंस डिफरेंट थी बट देयर स्पिनर्स वो बैक करेंगे उनको अगेंस्ट नेदरलैंड को. उनको मुसीबत पड़ेगी बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर श्रीलंका इवन ऑन दिस पिच कि यार यहाँ तक स्कोर ज़्यादा भी कर सकते हैं बट द वे इट वेंट इन द लास्ट गेम इस पिच पे बड़ा मुश्किल था. एक तो गेंद थोड़ा बहुत वो जो स्पंजी बाउंस था, फिर बॉलर्स इनके पास बड़े ज़बरदस्त हैं, मीडियम पेसर्स हैं, फास्ट डिलाइडे जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं. आई थिंक थोड़ा सा टेस्ट है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह दें कि थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिल जाएगा तो उससे ये मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. अदरवाइज अगर फ्लैट जो पिछले मैच वाली पिच थी वो उस पे होता तो श्रीलंका वुड हैव बीन श्रीलंका बैटिंग पहले करे या सेकंड. या नेदरलैंड्स के पास मीडियम पेसर्स हैं, उनको बैट्समैनों को क्रीज में मूव करना रहेगा, थोड़ा डाउन द विकेट आना पड़ेगा ताकि वो जो एक 6 से 8 मीटर वाली लेंथ है वो ना बन सके. उस लेंथ को डिस्टर्ब करना. ऑलवेज जब अच्छी बैटिंग विकेट होती है, ट्रू पिच होती है, उस पे जो फेवरेट टीम होती है मोस्टली वही जीतती है. बट ऐसी पिच पे अब ऐसी पिच पे जहाँ ये एसोसिएट कंट्रीज के मीडियम पेसर्स स्पेशली फ्रॉम Holland, Namibia and all these guys, they know how to bowl on these pitches. Consistent back of a length, couple of variations. अगर जैसे शोएब ने कहा अगर आप इसके अब आगे पीछे होंगे नहीं एज अ बैट्समैन तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे बॉलर्स. बिल्कुल. और काउंटी क्रिकेट बहुत खेलते हैं ना ये सारे, जैसे स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है. एक ही विकेट ली है मीकरन. He played for Durham, Gloucestershire and Somerset T20. He's got 50-60 wickets already. ये 140 का बॉलर है, ये भी डिलाइड है, 140 प्लस करता है. तो इनके वो मीडियम पेसर एक दो हैं लेकिन इनके पास पेस वाले बॉलर भी हैं. राइट. वकार, ये इंटरेस्टिंग जो बात हो रही थी कि उनके मीडियम पेसर्स हैं. कल आपने बोला कि मीडियम पेसर्स को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए. अगर इफ यू डोंट हैव टू मच स्पेस, you do subtle variations and everything and all. And we've seen the Netherlands bowlers use subtle variation in the previous game as well. Yeah, you don't have choice otherwise. I mean, you can't threaten the batsman with the pace, so you have to come out with different variations. आजकल वो नक्कल बॉल बड़ा अच्छा आया हुआ है जो has been very effective. इस पिच पे आई एग्री विद मिसबा कि ये कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है. नेदरलैंड और ऊपर से नेदरलैंड 2 मैच जीती हुई है, डोंट फॉरगेट. All right, with that we are all set to take you back to Geelong where both the captains are walking to the middle for a toss. And the toss is brought to you by Dettol. And Natalie is there with the 2 captains all set to flip the coin. We'll see you on the other side of the toss. Sri Lanka won the toss at Geelong and have elected to bat first. And Misbah, you predicted that 150 is what Sri Lanka is going to be targeting. Let's just go around the table and see. Shoaib, what do you think Sri Lanka is going to be able to score here, batting first? I think जो मुझे कैप्टन के फेस एक्सप्रेशन से लगा है वो प्रेशर में. और अगर आपका लीडर प्रेशर में हो तो ऑटोमेटिकली जो टीम है या जो प्लेयर्स हैं वो देखते हैं आपका लीडर, उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं या वो कैसे, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द गेम. तो मुझे ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है जो कि उनको कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए था. एटलीस्ट जो भी उनके दिल में चल रहा है, बट पॉजिटिव एक आप चीज़ लेके आते हैं जो कि मैसेज आता है स्ट्रॉन्ग ड्रेसिंग रूम में कि नहीं, लीडर जो है वो खड़ा हुआ है, सॉलिड है. लेकिन मुझे ये लगता है जो उनका 4 नंबर है उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. दे हैव इवन ट्राइड डिफरेंट प्लेयर्स लेकिन वो कुछ चल नहीं रहा क्योंकि उनका निसाका और कुशाल मेंडिस जो ओपनर हैं वो दे हैव बीन कंसिस्टेंट. और हमने एशिया कप में भी देखा तो 4 नंबर 1 जो है उस पर वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही. लेकिन राजा पक्षा जो है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है उस नंबर पे और फेयरलेस क्रिकेट खेलें. ये नहीं सोचें कि हमने 150 करना है, सोचें 180 का. Okay, so 180 का सोचें. Yeah, that's what you're expecting from them. 150 from Misbah. Wakar, what do you think Sri Lanka should be able to achieve here? I mean, to be on a safe side, I think they need at least 170. Right. 170, once they get it, I think they'll feel a lot more. 150 pe, they will all be sitting on the edge because इनकी bowling में भी injuries हुई हैं, नए बंदे आए हैं. So I feel कि कहीं ना कहीं डर रहेगा 150 पे. 170 पे I think with the spinners they've got, they'll feel confident. All right, Wasim, some of these deep pockets that we keep referring to, that Shoaib has said कि जी उसमें आप gap में डाल के जो करें. We've also, there is another challenge for the fielders, especially deep, जो बहुत आपको लंबी boundary पे जाना पड़ता है, and that is making sure that the throws come in fast and flat.
right? Yeah. And we see that sometimes they deploy one person in the middle who actually takes the throw and passes it on as well. Back in the old days, I remember you throwing from the boundary. I remember Jaz Ahmed throwing really fast and flat. I remember Inzi throwing some really fast and ferocious throws. में जब मैं इमरान भाई की थ्रो बहुत तेज थी वहाँ से, बकार की थ्रो तेज थी, because हम अब I don't know आपका क्या है आजकल का इनका जो है वो you know SOP, हम प्रैक्टिस में दबा के थ्रोइंग करते थे, पूरी प्रैक्टिस में हम ऐसे गेंद नहीं थे फेंकते, because अगर आप प्रैक्टिस में गेंद थ्रो तेज नहीं करोगे, so under pressure एक तो आपकी थ्रो एक्यूरेट नहीं आएगी और दूसरे आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे सारे जो आप थ्रो करते रहते हो। जो प्रैक्टिस में थ्रो करना बड़ा ज़रूरी है। When I see these youngsters, पहला गेम T20 का ऐसे थर्ड मैन पे गया तो 3 टपों में आया कीपर के पास। That looks horrible. That doesn't show कि as a team हमारे ज़माने में ना वन बाउंस थ्रो जो थी ना वो इंसल्ट फील की जाती थी बिल्कुल। अब मॉडर्न क्रिकेट में दे ऑल द कोचेज आल्सो दे से थ्रो वन बाउंस, लेकिन इन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे समटाइम आपको असेस करना पड़ेगा ग्राउंड कितना सॉफ्ट है, समटाइम बॉल फंस जाता है। स्क्वायर बड़ा हो ना तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लॉय कि जी आप वन बाउंस करो तो गेंद स्किड करके तेज आता है, लेकिन हमारे ज़माने में अगर किसी ने शूट देती है ना तो जस्ट एवरीवन विल लुक एट। विकी भाई उस टाइम पे पैदल सिंगल लेते थे, पैदल चल के लेते थे ओढ़ने से लेते। We'll have a discussion on that. We'll take a quick break right here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back from the break. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion and you're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. We're back in Group A. We're back in Geelong. We were talking about the first match. Sri Lanka has won the toss and elected to bat. Netherlands will be chasing. But let's talk about the second game that is coming out of Geelong today. Namibia versus the United Arab Emirates. Namibia being the favourites, UAE, well, they would like to go home with a win under their belt. This is the game that is coming up, match number 10. Let's talk head-to-head how these teams have done. These two teams have played only once before in Dubai in 2021, and Namibia obviously won that match by 17 runs. For Namibia, they need to win this, so it's a very straight shootout for Namibia. Yeah. They win, they qualify, and UAE obviously it's a start of the tournament, and I think discussion should be about that game and about UAE. How can they improve their cricket? Because बाकी इनसे आगे निकल चुके हैं. Namibia ले लो, Netherland ले लो, because all their players, most of them play county cricket or in South African League. और I think अब UAE को सोचना पड़ेगा इनके जो players हैं, either ये पाकिस्तान आके या इंडिया या श्रीलंका, कुछ ना कुछ उनको off season खेलना पड़ेगा if they want to compete with other teams. That's where they're lacking. Do you think, Wasim, that the International Premier League that is happening in the United Arab Emirates, will that have an impact for their players? Probably, but again, they don't have enough players. So why it's called ILT20? Because उसमें 9 overseas player खेल सकते हैं playing 11 में, और 2 आप खिला सकते हो, either इस UAE का एक होना चाहिए और एक associate countries का होना चाहिए. Hence the International League T20 का ILT, sorry. उससे फर्क पड़ेगा, but they need some more young blood backup. ताकि इनके जो जब ये 42 तक खिलाते रहेंगे लड़कों को, कुछ पीछे लड़के नहीं है इनके पास. सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो आपने बात की है ना कि बाहर जाके उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कहीं ना कहीं इवन अगर स्टेट क्रिकेट खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, दैट विल हेल्प देम. बैटिंग डिपार्टमेंट में इनको हमेशा प्रॉब्लम रही है जब भी कंडीशन थोड़ी सी ऐसी आती है. जैसे बाहर के क्रिकेटर्स हैं ना, प्लीज याद नहीं, जैसे बाहर के क्रिकेटर्स हैं उनको स्पिन खेलने का थोड़ा इशू रहता था. उन्होंने क्या किया, अपने प्लेयर्स को, इवन प्लेयर्स हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी एंड दे हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, कमिंग टू सब कॉन्टिनेंट वेरेवर दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. तो स्पिन को, तो इसी तरह जो ये प्लेयर्स हैं, कोई ऐसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए. एंड आई एम श्योर दे हैव इनफ मनी, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, तो भेज सकते हैं, काउंटीज में भेज सकते हैं, साउथ अफ्रीका भेज सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है. आपके जो उनका जो डोमेस्टिक का जो, जब तक डोमेस्टिक लेआउट नहीं करेंगे प्रॉपर्ली कि जी आप 2 डे क्रिकेट खेलें, 3 डे क्रिकेट खेलें, तब तक डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल है. सारे वो T20 के पक्के हुए हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बहुत होती है. Like I said, there are 50+ grounds still. They are struggling to find 11 players. So that's where the problem is. And coming back to Namibia, I think they should make sure कि their जो power hitters हैं, पिछले मैच में वो आपका वीसे और JJ स्मिथ वो 19वें ओवर में आए हैं. भाई उनको रखो तुम कम से कम में, नहीं तो 14वें 15वें वो बैटिंग करने आ जाएं अंदर, ताकि उनको ज़्यादा बॉल्स मिलें. All right, with that it's time for the expert predictions, brought to you by Olivia.
Expert prediction brought to you by Olivia Moisturizing CML. Olivia, shukriya. All right, let's start off with the Misbah. First up, तो पहले मैच में who do you think is taking the victory? श्रीलंका और दूसरे मैच में नामीबिया. Sri Lanka and Namibia. Wasim? I want to see someone saying differently. Okay. Sri Lanka, I'll say Sri Lanka and Namibia. Okay, Vakar. Please Vakar bhai. Yeah, I'll say differently. Same. Sri Lanka, Namibia. Yeah. Shoaib? Netherland. श्रीलंका एंड UAE. क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ. UAE. बिल्कुल सही है. So why not? And Sialkot, that's it. Yeah. And Burewala also. And Bulevar also. That were your expert predictions brought to you by Olivia. Expert prediction brought to you by Olivia Moisturizing CML. Olivia, shukriya. ब्रेक से पहले जो थी हम बात कर रहे थे थ्रोज के ऊपर और शोएब मलिक ने जो है वो ये बोला कि पैदल चलते हैं कुछ प्लेयर्स और थ्रो के ऊपर बड़ा आपने कोई आप ऑब्जेक्शन करना चाह रहे थे. मैं ऑब्जेक्शन नहीं था, वो सिर्फ एक क्वेश्चन था वकार भाई सर. उन्होंने कहा कि जी लेते थे. मतलब कौन थे वो? बात हो गई. कि पुरानी बात हो गई. पुरानी बात हो गई है. हाँ जी, मुझे याद भी नहीं रहा सवाल. 10 मिनट पहले 7:30 बजे निकाल जी. नहीं, फाइक स्ट्रेट अवे जो सिंगल लेते थे, जो मुझे ऑपोजिशन का याद है, अपनों का नाम नहीं लूंगा, नाराज हो जाएंगे, बट राणा टुंगा और आपने एक्चुअली नाम ले दिया. नहीं नाम नहीं लिया. क्या राणा टुंगा का जब हम टीम मीटिंग में होते थे कि इसको वॉक नहीं करने देनी, ये जिस एंड पे जाता है थ्रो उधर ही करनी है हमने. सो दैट वाज द Put pressure on him to get in. T20 cricket made a big difference. Yeah. T20 जबकि आई है, you have to really. Okay, I'm going to have to stop you guys here because we're going to cut across live to Geelong where the games are about to start. We will see you on the other side of the games. Keep watching. It's Sports and 10 Sports. See you at the end of the games.